इंडिया एंड अफगानिस्तान। लास्ट टाइम हमने बात की थी इंडिया और पाकिस्तान की, अब हम देखेंगे इंडिया और अफगानिस्तान की। इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप में क्यों इंडिया के लिए अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों अफगानिस्तान की लोकेशन इंडिया के लिए मैटर करती है, और जब भी हम देखते हैं साउथ एशिया को तो हम इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस की क्यों बात करते हैं। क्या यूएसए का कोई इंपैक्ट रहा इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप में? क्या चाइना का कोई रोल है अफगानिस्तान के साथ? क्या पाकिस्तान का कोई रोल है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप में? आज की वीडियो में और जो अगले फ्राइडे वीडियो आएगी, इन दो लेक्चर्स में हम बात करेंगे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस की। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस के पहले हिस्से की, पहले भाग की, जिसमें हम यह बात करेंगे कि अफगानिस्तान की लोकेशन या अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, और साथ ही साथ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल दैट इंडिया इज प्लेइंग एंड द इनिशिएटिव्स दैट इंडिया हैव टेकन। और हम ये सारी बात कर रहे हैं अपनी वर्ल्ड फोकस सीरीज में। माय नेम इज अनुज शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस विद यू इंडिया एंड अफगानिस्तान। सो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान को, तो लेट अस लुक एट द लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान। सो व्हेन वी लुक एट द लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान, तो सबसे पहले हमारे सामने जो बात देखने को आती है कि वो ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा एज सच कोई बॉर्डर एरिया टच नहीं होता। किस वजह से नहीं होता? क्योंकि ये जो एरिया है ये पीओके या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया आता है। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये सारा का सारा इंडिया ऑक्युपाई करता है या इंडिया के पास होता, तो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच हो रहा होता। तो काफी जगह हम ये पढ़ते हैं दैट अफगानिस्तान इज अ नेबर ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अ नेबर ऑफ इंडिया, बट डज वी हैव और डू वी हैव एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल कनेक्टिविटी ऑफ अफगानिस्तान? एज ऑफ नाउ इट इज नो। रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस पीओके. So when we look at the geostrategic or when we look at the location of Afghanistan, what we can make out from this is that Afghanistan एक तरफ से और एक तरफ से इंडिया, बीच में पाकिस्तान सैंडविच हुआ है, जिस वजह से अफगानिस्तान की रेलेवेंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बेसिक चाणक्य कौटिल्यस थ्योरी और द कौटिल्यन थ्योरी दैट नेबर ऑफ योर नेबर शुड बी योर फ्रेंड। तो इंडिया का नेबर पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेबर अफगानिस्तान, मित्र अविमित्र। ठीक है, तो उसी तरह आपका अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का फ्रेंड होना चाहिए, और इंडिया ने उसी चीज को फॉलो करते हुए अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखे हुए हैं। उसी तरह अगर हम देखें, अफगानिस्तान हमारे लिए कनेक्टिंग पॉइंट बन सकता है। कहां पे निकलने के लिए? देखिए, वेस्ट एशिया ईरान आ गया, और ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये आपका सेंट्रल एशियन रीजन आ जाता है। तो अफगानिस्तान एक बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है, अफगानिस्तान एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है इन द ग्रेट गेम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्रेट गेम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है यार? कि अगर हम, और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेट गेम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अफगानिस्तान ने पहले भी आपका, पहले मुगल्स के टाइम पे भी कंधार की बात होती थी तो अफगानिस्तान ही था एक तरह से। उसके बाद ब्रिटिश ने भी अफगानिस्तान को होल्ड करने की कोशिश करी, ब्रिटिश और रशिया। ये ग्रेट गेम का कॉन्सेप्ट है, ये आप एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं ज्यादा इसके ऊपर एलैबोरेट नहीं कर रहा हूं। ये ब्रिटिश और रशिया का आइडिया था आपका, जब ब्रिटेन अंपायर जो था या ब्रिटिश था वो एक लार्जर कॉलोनियल पावर होता था। अब प्रेजेंट एरा में न्यू ग्रेट गेम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी अफगानिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस न्यू ग्रेट गेम में जहां पे इंडिया एक बड़ा प्रोमिनेंट प्लेयर है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मेजर पावर है वर्ल्ड अफेयर्स में। साउथ एशिया का तो लीडर है। चाइना के साथ कंपैरिजन या चाइना को कंपीट करने की क्षमता किसमें है? इंडिया में है। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। उसी तरह अगर हम देख रहे हैं न्यू ग्रेट गेम की अंडरस्टैंडिंग को, जहां पे रिसोर्सेज की बात हो रही है, जहां पे सिक्योरिटी की बात हो रही है, जहां पे ऑयल्स की बात हो रही है, जहां पे मिनरल्स की बात हो रही है, वहां पे इंडिया तो आएगा ही आएगा। तो उस न्यू ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट से अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड और व्हाट वी अंडरस्टैंड और व्हाट वी शुड नो प्राइमरली इज दैट कि किस तरह और हाउ अफगानिस्तान एंड चाइना एंड यूएसए ऑल आर इंटरेस्टेड। ये जो सेकंड टॉपिक बताया ना मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान, चाइना, इंटरेस्ट ऑफ रशिया, इंटरेस्ट ऑफ यूएसए, दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बट लेट अस अगेन टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान टू इंडिया। तो
इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान टू इंडिया में सबसे पहले तो मैंने आपको लोकेशन के स्पेसिफिक बताया, एंड देयर वी डिस्कस द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान, दैट अफगानिस्तान इज इन प्रॉक्सिमिटी टू ऑयल एंड मिनरल रिच रीजन्स ऑफ साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया. सो अफगानिस्तान कैन बी a land connectivity for India, land connectivity for India to gain its minerals or gain its resources. So for that reason Afghanistan's relation with India become very important. Second thing is help India fight narco terrorism, right? Great Crescent, Golden Crescent, Golden Triangle का आपने नाम सुना होगा. You must have heard about Golden Crescent and Golden Triangle, where you must have heard about that how this understanding or how this understanding of narco terrorism is hampering the growth of India, Pakistan and Afghanistan. तो अगर हमारे अफगानिस्तान से रिलेशनशिप अच्छे हैं तो हम नार्को टेररिज्म को फाइट कर सकते हैं. दूसरी चीज हम बात करते हैं strategic depth that it gives to India. When we talk about the strategic depth that it gives to India, so here primarily what we are talking about in the strategic depth, what we are talking about is that let us look at the map, then I'll explain you. Strategic depth की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान, अभी हमें अगर अफगानिस्तान पहुंचना है तो we have to go through Pakistan. Now if we have to go through Pakistan, so what will happen is that we will reach Central Asia via Afghanistan, that is via Pakistan. So if India and Afghanistan have a certain kind of interconnectivity, be it by Chabahar port, in which Afghanistan पे हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो उससे हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी. अभी छाबार पोर्ट की भी हम बात करेंगे. देखिए, right, second is, next is reduce influence of Pakistan. When we talk about reducing influence of Pakistan, so we are talking from two ideas. One is South Asia and second is Taliban. In the next lecture, in the next video, we'll discuss about peace plan of Taliban, USA peace plan with Taliban, and if Taliban's influence decreases, that means the influence of Pakistan also decreases. Next is counter increasing influence of Taliban and spillover effect on Kashmir. That is basically the terrorism problem, that the terrorism that Kashmir is also facing and India is going through it. So if Taliban is controlled or India maintains good relationship with Afghanistan, so by that what we can also do, by that we can reduce the influence of Taliban on Kashmir militancy or Indian militancy or Pakistani militancy, which ultimately will have a spillover effect on Kashmir. So that is one issue. And last is India has invested heavily in Afghanistan, and as India has invested heavily in Afghanistan, so India needs that there should be complete safety and there should be complete infrastructural protection of economic interests of India. So these are certain issues that because of that Afghanistan is important to India. Now let us see that what assistance India has given to Afghanistan. India primarily has focused on soft power. Now there are different types of powers. One is hard power. This is primarily when we talk about coercive power, कि military forceful, जो force जिसमें involved होती है ना, coercive power, उसको हम hard power की बात करते हैं. When we talk about soft power, तो soft power basically is primarily, या more importantly, are the non-coercive powers. That means you are influencing a country via your culture, you are influencing a country via your trade, you are influencing a country via your Bollywood. So all these things are considered to be soft powers. So India primarily, with context to Afghanistan, has used soft power, right? India counters Taliban, but India does not go on Afghanistan's peace and Afghanistan's territory or Afghanistan's land and fight Taliban militarily. What India does, India says that Taliban, we do not accept Taliban, but when we talk about Afghanistan government or Afghanistan's democratically elected government, we are ready to support the peace process, we are ready to support the development of Afghanistan and for betterment of Afghanistani people. That is what is the understanding of soft power from India's perspective. So out of these soft power strategies, first are the state driven initiatives.
Now, what are the state-driven initiatives? First is that their Prime Minister Modi, in way back in 2016, inaugurated Salma Dam. Now, this Salma Dam is considered to be Afghan-India friendship dam and built on the Hari River, and it is a $290 million project. Right. So this basically will help Afghanistan in or being self-sufficient in hydroelectricity. So one is this, and second is that there is a signing of Afghanistan strategic partnership, which was signed in 2007. India-Afghanistan strategic partnership that was signed in 2007, and this focuses on socio-cultural, economical, educational, trade and etc. all the purposes. पूरा वाइड स्प्रेड आपके रिलेशनशिप जो है इंडिया और अफगानिस्तान की, उसकी बात करता है क्या? उसकी बात करता है आपका इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. Also there is diasporic engagement. Recently there was a survey conducted by Indian Embassy, and which basically concluded that there are more than 1700 Indians residing in Afghanistan as of now as well, and also there are many Afghanistan people or Afghans residing in India, right? And also there is a cultural, now there is also basically what we consider to be cricket diplomacy with Afghanistan, right? You see that there is a presence of Afghanistani cricket team in India. BCCI has given them training facilities. There are many Afghanistan players playing in Indian Premier League, IPL. Rashid Khan is there, Nabi Khan is there, Mujibur Rahman and many more. So this is what is cricket diplomacy. So all these things are basically with regard to the soft power relationship that India maintains. Second is cultural initiatives. When we talk about cultural initiatives, what we say is that India-Afghanistan Cultural Week, this was held in association with India-Afghanistan Foundation and ICCR, right? So in this particular understanding, what has been discussed that how culture becomes a very significant soft power. And third is connectivity of religion, that is connectivity of Islam. There is a lot of Afghanistan is primarily Islamic nation, and India also has a lot of Islamic population or Muslim population. So this also hinges, or this also becomes a very important relationship point between the two countries. Now, if we also talk about economic initiatives which are very important or which are very significant. So first economic initiative is that post 2001, that is after Taliban's rule ended in Afghanistan, India announced $3 billion aid to Afghanistan. Now India is one of the largest economic aid or assister to अफगानिस्तान. सबसे ज्यादा अगर किसी ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान को इन्वेस्टमेंट दी है, अफगानिस्तान की सपोर्ट करी है, वो इंडिया है, राइट? ऑल्सो इंडिया इन 2003 announced a $70 million Zaranj Dilaram highway. Now what is this Zaranj Dilaram highway? This Zaranj Dilaram highway, sir, is also considered to be Garland highway, right? So what is this Zaranj Dilaram highway? This is basically the highway that, or the connectivity that starts from Kandla port of Gujarat, that is India, going up to Chahabar, जहां पे इंडिया पोर्ट बना रहा है, कहां पे? ईरान में. From this Chahabar port there will be a connectivity, road connectivity to Zaranj in Afghanistan. Then there is Dilaram, then there is Herat, here is Kandhar, Kabul and Mazar-e-Sharif. So this is primarily a Garland highway that India talks about. So ये connectivity बड़ी important है इंडिया के लिए. जो strategic depth की मैं starting में बात कर रहा था, वो strategic depth यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, जहां पे कांडला से छाबहार, छाबहार से जरान, जरान से दिलारम, वहां से हेरात, कंधार, काबुल और मज़र-ए-शरीफ तक अगर कनेक्टिविटी बन जाती है. और यहां से फिर इंडिया की कनेक्टिविटी कहां जा सकती है? सेंट्रल एशिया में और साथ ही साथ वेस्ट एशिया में. सो दिस हाईवे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इंटरेस्ट इन
Afghanistan. Second is that India has also built schools in Afghanistan and also built parliament in Afghanistan, which shows India's interest in promoting democracy, right? And also what India has done is that India has also opened hospitals and medical facilities, and even during COVID, when the entire world was suffering and India also faced a lot of problems, India did not forget its friends. What India did? India basically sent wheat and many other things, agricultural support to Afghanistan, so there is food security in Afghanistan. And also hydrochloroquine, when the world was searching for it, India was helping its friend. Hydroxychloroquine, India was helping its friends. And even in the vaccine Maitri initiative, India has gifted 5 lakh doses to Afghanistan. So India has always been a helpful friend, a wonderful friend when it comes to the context of Afghanistan. So I hope you liked the lecture, you enjoyed the lecture. In next time we will basically talk about US Afghanistan peace deal and impact on India, China, Russia and USA. Till then, thank you very much. Be safe, study hard, all the best.